folks, welcome to our YouTube channel. I am Surbi, your fashion buddy and a proud Nifty alumni. Are you aiming to crack the NID 2024 entrance exam with flying colors? Look no further because आज के वीडियो में we'll dwell into the NID syllabus for both BDES and MDES courses. But before getting into the video, make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. To kick things off, let's clarify what NID DAT is all about. NID DAT जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्जाम है आपका गेटवे टू द अमेजिंग 5 कैंपसेस ऑफ NID which are NID अहमदाबाद, NID भोपाल, NID कुरुक्षेत्र, NID जोरहाट और NID विजयवाड़ा. This exam opens door to some amazing design specialization. एग्ज़ाम डिटेल्स में जाने से पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस जो कि NID ऑफर करता है. एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन. अब जब आपको एक आइडिया मिल गया है अबाउट द NID campuses and specialization, so let's break down the syllabus and the stages of the exam. NID में 2 stages होते हैं, prelims and mains. Starting with the prelims examination for BDES. The NID BDES prelims examination is your initial gateway to the world of design at this esteemed institute. इस स्टेज में आपको मौका मिलेगा पूरे 100 मार्क्स अर्न करने का. इस सेक्शन में दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं. To ace this stage, you will have a generous time frame of 3 hours. Now let's dwell into the key topics you should focus on during your preparation for NID BDES. यहाँ पर they will be checking your knowledge of basic subjects जैसे Drawing Aptitude, English and GK. Section 1 में आता है Aptitude, English and GK. Aptitude के topics हैं Series, Paper Folding, Group of Images, Image Analysis, Analogy, Mirror Image, pattern completion, paper cutting, dot situation, cubes and dies, classification, water image, figure matrix, rule detection, shape construction, missing figure series, unfolded dies, folded cube dies, figure counting, embedded image, odd figure out, deviation of figures. कम्युनिकेशन एबिलिटी सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसके टॉपिक्स हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन. When discussing general knowledge and current affairs, it's important to highlight that candidates are required to remain well informed about the global happenings. This particular section aims to assess a candidate's awareness of online events, their grasp of general knowledge, and their comprehension of community issues. Within this category, candidates can expect to encounter a diverse range of topics. Here are a few examples of subjects typically covered within this section. World Heritage Sites, which are Indian geography, important rivers, landscape, mountains, etc. Cabinet Ministers, Indian history like Mughal dynasties, pre and post Britishers, Indian independence history, etc. Culture and craft like classical and folk dance, classical and folk music, Indian craft, embroideries, etc. Brand logos, taglines and brand ambassadors. Famous designers like logo designers and fashion designers. States and capitals. Important awards like Nobel Prize, Oscars, Grammys. Sports like FIFA, IPL, Cricket World Cup. For current affairs, just stay updated with the latest happening in the world. ये बात हुई सेक्शन 1 की. अब आते हैं सेक्शन 2 में जो कि सबसे ट्रिकी और सबसे इंटरेस्टिंग एंड फन सेक्शन है जिसमें आते हैं ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, डिज़ाइन फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कलर थियोरी, इंस्पिरेशन एंड डेवलपमेंट, ड्राइंग फंडामेंटल्स, विजुअल डिज़ाइन, गुड वर्सेस बैड डिज़ाइन, ऑप्टिकल इल्यूजन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड राइटिंग, कंपोजिशन प्रिंसिपल, फॉर्म एंड फंक्शन. अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की जो कैंडिडेट्स MDES एस्पायर कर रहे हैं NID से. उनका प्रीलिम्स का पैटर्न BDES के जैसा सेम रहेगा. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉमन डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट covering the same comprehensive design principle as the BDES syllabus. Let's talk about mains now. जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम क्लियर कर लिया है उनका नेक्स्ट स्टेप है मेंस.
The studio test is an important component of this stage and emphasizes hands-on skills and practical design aptitude. Candidates की practical skills को evaluate करने के लिए इस stage में कई activities कराई जाती हैं. The key element of this studio test includes listening comprehension, observation skills, group discussion, hands-on model making, audio-visual questions, sketching or drawing. Questions related to these topics will be asked in NID studio test. Also, they don't have any fixed pattern of question to be asked. So there are a lot of confusion regarding the portfolio in NID studio round. So let me clear your doubts. B-Desk candidates are in luck because no portfolio needed here. In M-Desk, they may or may not ask for a portfolio, but being ready is a good idea. So it was all about NID syllabus. Understanding the NID exam format is essential to excel your exam preparation. Whether you are aiming for a bachelor's design or master's of design program, the prelims and mains examination demands a strong foundation in design principles, practical skills and creative thinking. We hope this expanded guide helps you embark on your NID journey with confidence and enthusiasm. If you haven't checked out our Everything About NID video, then do check it out. We'll be coming with a detailed video on each subject. If you found this video helpful, give it a big thumbs up and share it with your friend who might be aspiring for NID. Also, don't forget to join us on Telegram channel to get free study material that will help you prepare for your NID exam. If you have any doubts regarding the NID syllabus, leave a comment down below. Thank you for watching and best of luck for your NID journey. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.